हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, आई एम अलका कंटवाल एंड दिस इज एन एजुकेशनल channel wherein we talk about computer science for grade 11 and 12, and also the main focus is PGT and TGT computer science and computer for all the competitive exam. We know computer is a very important section for all the competitive exams nowadays, so that is our focus as well. And I'm taking up the topics of mathematics from grade 7 to 10 as of now. Later, I will be taking 11 and 12 topics as well. So those who have not yet liked, shared, and subscribed, make sure you are liking the channel, sharing it, and subscribing to the channel. So let us move ahead. I would like to tell you all the situation. So there was a boy, Rohan, and his father. They were discussing that दिवाली आने वाली है, तो थोड़ा सा रिनोवेशन कर लेते हैं। हमारा जो शॉप है उसकी थोड़ी रिनोवेशन कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला चलो बैंक में चलते हैं और लोन के बारे में पता करते हैं। तो जब वो लोग बैंक में गए तो रोहन वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट वेरियस केसेस। तो उसने देखा कि वहां पे साइड में एक ऑफर लिखा हुआ है। ऑफर लिखा है कि फॉर सीनियर सिटीजन्स द लोन विल बी प्रोवाइडेड एट 6% सिंपल इंटरेस्ट, और फॉर ऑल अदर पीपल इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रोहन ने सोचा कि ये क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम रोहन का जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। एंड लेट अस मूव अहेड विद द सेशन टुडे। यस, so let us start. So okay, so here I would like to explain you through this example. Okay, for example, एक सिचुएशन लेते हैं कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, रेट 10% है, टाइम 2 years है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जब हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फाइन। तो P we have kept 1000 into rate. We are calculating for the first year first. So 1000 into 10 by 10 into 1 by 100. So rupees 100 हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, और लोन जब देते हैं बैंक तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देते हैं क्योंकि उनका फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट में देने के लिए। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट आया तो जो नया प्रिंसिपल बन गया फॉर द नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन, उसमें हमने क्या किया, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो ये हमारा नया प्रिंसिपल बन गया। एंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम रहेगा। दैट इज वाई सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा इट विल बी ऑफ लेसर वैल्यू, and when we have to pay for from the compound interest, the value which we will have to pay after a particular duration, that will be high. अब देखिए, अगर हमने नया प्रिंसिपल 1100 ले लिया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 110 हुआ, तो व्हाट इज टू बी पेड बैक, 1210। और यहाँ पे 1000 plus 100 plus 100, that is 1200. Yes, so this is 1200. So see, for a small value 1000 rupees, हमारा सेकेंड ईयर में डिफरेंस आ गया 10 रुपीज का। इफ वी फर्दर कीप ऑन प्रोसीडिंग द वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल रिमेन सेम थ्रू आउट। इज इट फाइन? तो हमने क्या समझा अभी? दिस वाज एन एग्जांपल। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, दैट सिंपल इंटरेस्ट में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P into R into T by 100, and this is the formula which is used to derive the compound interest formula. And simple interest and compound interest for the first time period, it will be the for the first time duration, it will be the same. ओके, एंड देन अहेड क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहेगा, P1 P2 P3, बट हियर द प्रिंसिपल रिमेन्स थ्रू आउट। इफ यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 1 lakh फॉर द फर्स्ट ड्यूरेशन ऑल्सो, सिंपल इंटरेस्ट में 1 lakh भी प्रिंसिपल रहेगा, सेकेंड ईयर में भी 1 lakh रहेगा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली चार्ज हो रहा है, तो एक साल के लिए P1 होगा,
उसके बाद दूसरे ईयर वो प्रिंसिपल फिर चेंज हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड हो गया, नया प्रिंसिपल बन गया, फिर नया इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड हो गया. सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट इज व्हाई दैट इज बेनिफिशियल फॉर एनीवन. बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे वुड प्रेफर कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज दैट विल गिव देम मोर इंटरेस्ट. थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है? व्हाट डू यू थिंक? डज इट मेक सम क्लैरिटी to you all? So if I tell you, how do we derive the formula for compound interest? How did we get the formula? So let us see what is the formula and how did we derive it. Derivation of the formula for compound interest. So we know that for the first year, what is it? P into R. If P is the principal, R, and T is the time duration by 100. Is it fine? Is it fine? तो हमारा अगर हम लोगों ने किया, ये I1 है, interest 1. So if we, for the first year, let us consider for the first year, what happens? Interest is equal to, tell me, P into whatever is the rate into time. First ये ले लेते हैं 1 by 100. So do you know amount is equal to principal plus interest होता है. तो अगर मैंने P किया प्लस इस ये वाला फॉर्मूला डाल दिया इसमें, इंटरेस्ट के बदले P इंटू R इंटू 1 by 100. तो इन दोनों से अगर मैंने P को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस R बाई 100. इज इट फाइन? तो ये क्या हो गया, अब ये P2 हो जाएगा. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. डज इट मेक सेंस? तो ये क्या बन गया, अब हमारे नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन गया. So let us see what happens after it becomes the principal for the next year. Now for the second year, for second year, फिर अगर हमने इंटरेस्ट I2 निकाला तो P इंटू R इंटू T बाई 100. सो P इज नाउ P2 बिकॉज प्रिंसिपल P2 हो गया इंटू R इंटू T बाई 100. T मतलब 1 लगा दो बिकॉज फॉर द सेकेंड ईयर वी आर कैलकुलेटिंग. तो अगर हमने P2 इंटू R बाई 100 आया, so now when you calculate the amount, what will we get? P2 plus I2. I2 कितना है? P2 into R by 100. अब इसमें से P2 आप कॉमन निकालो, P2 into 1 plus R by 100. Is it fine? So if we put the original value of P2 in this equation 2, so what we will get? P into 1 plus R by 100 into 1 plus, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 plus R by 100 है, 1 plus R by 100. तो हमारा P into 1 plus R by 100 to the power of 2 हो गया. For the second year, it came out to be P into 1 plus R by 100 to the power of 2. So this is the amount for the second year. अगर third year करेंगे तो amount is equal to principal 1 plus rate by 100 to the power of 3 and so on. Does it make sense? So first we started with this. For the first duration, we have taken T1. जब T1 ले लिया तो हमने बोला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू लगाई, इंटरेस्ट में ये वाली वैल्यू लगा दी. इनमें से हमने P को कॉमन निकाला, P को कॉमन निकाला तो 1 प्लस रेट बाई 100 आ गया. अब 1 प्लस रेट जब ये P2 हो गया, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. जब हमने नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला तो P2 इंटू R इंटू T बाई 100. तो P2 प्लस R बाई 100 फॉर द सेकेंड टाइम ड्यूरेशन पे अमाउंट क्या हो जाएगा? P2 plus I. So P2 को कॉमन निकाला और P2 के जगह हमने लगा दिया ये. So what are we getting? What are we getting? Tell me. If P amount first year के लिए हमारा आया ये, and then we got, what did we get for the second year? We got this, right? Similarly for n years अगर होगा, अगर n years के लिए निकालना होगा तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Principal 1 plus rate by 100 to the power of n. So this is the way we will calculate the, now compound interest निकालना है तो amount minus principal. तो amount निकालिए इस फॉर्मूला से, principal into 1 plus rate by 100 to the power of n, and compound interest is amount minus principal. So the derivation, I just want to tell you all कि वो interest, simple interest के फॉर्मूला से ही हमको मिला. अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द प्रिंसिपल. इंटरेस्ट जो भी प्रिंसिपल पहला है प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, फिर दूसरे ड्यूरेशन के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा.
या तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से यूज करो या डायरेक्टली भी अप्लाई दिस फॉर्मूला. डज इट मेक सेंस? Does it make sense, everyone? I hope it's clear to everyone. Okay, so just a brief thing that we started with I is equal to P into R into T, and we know amount is equal to principal plus interest. तो principal हमने ये रखा and P into R into T by 100. So या हमारा हो गया P into R into 1 by 100 for the first year. So P common लिया, so we got 1 plus rate by 100. Is it not? And then this became P2 for the next year. तो इसको हमने वहां पे लगा दिया. So now what happened for the next duration? What did we do? I2 is equal to P2 into R into T by 100. Is it fine? P2 is what? Amount is equal to P2 plus I2. So P2 plus I2 is what? P2 into R, and keep the time duration 1 only by 100. If we take P2 common, then we take 1 plus R by 100, and in place of this P2 we are keeping this value. तो हमारा फॉर्मूला आ गया P into 1 plus R by 100 to the power of 2. ऐसे ही 3 आ जाएगा, ऐसे ही 4 आ जाएगा. इसलिए अगर n years है, so the formula turns out to be amount is equal to principal 1 plus rate by 100 to the power of n, to the power of 4, 5, whatever is the duration. Is it fine? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो you let me know in the chat box that what is the part which is not clear to you on. Is it fine? Now moving ahead, if I tell you, if I give you all a question, find compound interest on rupees 12,600, okay, for 2 years, at 10% per annum, compounded annually. Is it fine? तो अभी अगर आगे आगे धीरे धीरे वो भी क्वेश्चन आएगा कि क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये आगे कन्वर्जन पीरियड भी सीखेंगे. सो हियर व्हाट इज द प्रिंसिपल? रुपीज 12,600. What is the duration? N is equal to 2 years. And what is the rate? 10%. Is it fine? Moving ahead, अब हम आगे क्या करें? अब हम आगे क्या करें कि हम लोग करते हैं अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं. देन इट विल बी इजी. ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, जस्ट राइट द फॉर्मूला एज मेनी टाइम्स यू आर डूइंग द क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ताकि वो फॉर्मूला हम भूले ही ना. तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 12,600. 1 प्लस व्हाट इज द रेट? 10 by 100 टू द पावर ऑफ n. n is 2. अब ये आ गया. अब एक और चीज बतानी है जो कि अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब यहाँ पे साइड में क्या है? 1 प्लस 10 by 100. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इजीली? ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 by 10. अगर हमने इसमें एलसीएम निकाला तो ये क्या आएगा? 1 10 10, 10 1 10, प्लस 10 1 10, 1 1 1. तो ये 11 by 10 हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पार्ट मैंने 11 by 10 कंसिडर कर दिया. नाउ इज इट क्लियर? हम लोग ये कैंसिल ऐसे कर सकते हैं. 0 0 गॉन. So 1 plus 1 by 10, it comes out to be 11 by 10. So 12,600 into 11 by 10 into 11 by 10 to the power of 2 है. तो 11 by 10 into 11 by 10. So 0 0 gone, 0 0 gone. 11 into 11 is 121. So 126 into 121, just do it. You will get rupees 15246. इतना आ जाएगा. अब तो हमारा अमाउंट आया. हमको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना आया हमारा? 15246 माइनस द प्रिंसिपल 12,600. So whatever is the answer, that is the compound interest. 2646, that is the answer, and that is the compound interest. समझ में आया? सो दिस वाज अ बेसिक एप्लीकेशन कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है, कैसे हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. कहीं कहीं पे बुक में आप लोग देखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को उन लोगों ने कॉमन ले लिया, उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ गया. सो व्हाट आई से, अप्लाई दिस फॉर्मूला. अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको बस प्रिंसिपल से माइनस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. सो just revise. So understand that compound interest formula has been derived from the simple interest formula, and for the first time duration both remains the same.
धीरे धीरे जब आगे बढ़ते रहते हैं, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, वो नया प्रिंसिपल बनता रहता है, तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट लेटर डेट में हमको देना पड़ता है वो हाई हो जाता है. Obvious, it is very obvious. So just go through it. Tomorrow I will be coming with the conversion period and one more important concept which is related to this. Okay, so this concept can be applied in our daily life also. जैसे कि the cases of dengue is increasing at a rate of this. So उसमें जब ग्रोथ होता है, जब कुछ डेप्रिशिएट होता है, तभी भी हम ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं. दैट आई विल टेक अप अ न्यू क्लास. सो अगर आपको समझ में आया एंड अगर आप चैनल से बने रहना चाहते हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोडेड एंड you just get to know about it. So all of you have a great day. Let's hope we meet again soon. Take care everyone. Bye bye.